Ya changma la jule tenenga ta isang hanma lecture bina seed dormancy che azranok yang khetana seed dormancy chache si causes yang na yunsa nunchi chire kinok te ostas bin hala tanga ta io main topic pono kau khoje syllabus na yutno ki what are the methods to break seed dormancy to seed dormancy o break choches yang na seed germination initiate choches yang na seed po germinate cha choches seed po shke choches nga ta sound se na ta bad na त्यो shke chukche sefia tizuk seeds gun ka dormant lose tyot nga ta due to various reasons ka nga ta hanma lecture na sil tyot tizuk seeds gun grow cha chukche sefia germinate cha chukche sefia kazuk methods ringa ta yang na kazuk tarika ri use chon ka veja se seeds gun germinate chen yang coin dormancy bo chagen metkan chen ठीक है सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास मेथड जो आता है दैट विल बी ओके सो सबसे पहला जो आपके पास मेथड आता है दैट विल बी स्कैरिफिकेशन सो स्कैरिफिकेशन मतलब चेज़ना नोज़ना आता है इजुक सीड्स खची गनोग जैसे लेग्यूमिनस सीड्स रिगुट के खला काउन खेतना आता है मैकेनिकली रब चुचस मैकेनिकल इना आता है ची मेथड ची यूज जो ना लकपा एम्पो चुचस हला कावा मैकेनिकल जन हला मैकेनिकली ngata yu chi chungena nokza rab mane touches hala yang ngata chi chungena nokzena ngata chipping chungena nok touches chungena nok hala ta basically ngata chi chuche nokzena ngata seed chis ko laspera tanspin ka cd seed code pokhetanang ma shante chiot pin hard yot pin hala तंगाता ची चूचे नोजना अगर यू हार्ड योतना तो हमें क्या करना है इस सीड कोड को जैसे तैसे हमें क्या करना है निकालना है ताकि अंदर जो एम्ब्रियो जो है वो पूरी तरह से ग्रो कर सके सीड के अंदर ठीक है तो उसको करने के लिए हम क्या कर सकते हैं ngataई सैंड पेपर खुरते हाला सैंड पेपर yang ngataई टुच्चे जमीन जक रिक्शुगुरी तो उस सैंड पेपर के बीच में आप क्या कर सकते हो इस शुगुंगिस खुरते ना काउ जर्जर योनो खला ngata pata no te juwa ngata seeds gun khurpa tene त्यो ngata टुच्चेस zar zan tu da chik pochi chano zena te seed coat ka ngata philo ga kaw jar te duxte yot te seed coat gun ngata philo ga butte on so that is called rubbing hala yang ngata chi chung yana nok zena yang chalak chik chik okay number 1 ngata rub chung yan chenok tu chest chung yan chenok hala yang ngata chi chung yana nok zena rub ma chu na ngata chi chung yana nok zena piercing chung yana nok pierce mane byang to che sala so ka seed po shante yot pindak sangata te wa pin nyam po ngata byang store yana nok piercing chung yana ठीक rale piercing chung yana nok yang na ngata blade nyam po yu tat yana nok hala blade nyam po tat yana nok taki इथं mga ta chifya chustno seed coat na biangs putches ya seed coat pangata tuches to chifya chustno zano taki te seed coat ka shante yotyo khetana budin yang nangku ayot ka ninga ta seed po khetana expose sonste being yang inangku nga tal demo chuste loma na roots kun form changyanin te vefia ngata scarification zirna ngata main मकसद पोते ना नो कि हमें वो जो हार्ड सीड कोट है उसको निकालना है by any means like rubbing halaka un lamo yang po but ngan chizo to ngata tut tang na but ngan chino yana sper na ngata pema chok shi thwate sound ngun tangste tene khetanang pema iwa wa shukna tene te vekane ngata khato ayut kane seed ko shamo gun but tang yong ngan chino hala yang kawun ma shante te unena ngata biang stor ngan chino hala piercing chung ngan chino yang na khitang blade khute tat ngan chino hala taki nangku seed po khitana piloga ngata expose chung ngan tigrale that is regarding your scarification first pongata scarification okay now moving on okay second method is your hot water treatment hala hot water treatment jara chiponga ta na ha gogos ki chu chante hala yang na kazam shik chante jana the water which has been heated up to 180 to
200 degree Fahrenheit. Yang na nga tayo Celsius inazir na yung nga tazir yan chano ki 80 to 100 degree Celsius sakpala 100 degree ka chu boil chano yan siya pata no so spa chu chante kolma chok chu chante cha juk spa preheated water bot pa tene testing ne nga tayo te chu chante ve na nga kao nga tayo taksa chu boil cheno thala kholin jigyot kholi skill layot te chu bo banchos te kholis kolin me borches kolin bu me borches chu khol chukches tene testing nga tayo chu gas ka kalto na gas banchos pa tene testing nga tayo inang kuwa seeds कुंदंग चलो ठीक है और इसको कितने टाइम तक सोक करके रखना है 12 to 24 आवर्स तक 12 ने 24 आवर्स जंगना जक चिक सकपा nga tayo chichuches nga tayo sound gun inang kuwa deep choste borches yang kita chu kurang कुल्या कूल chen छानो ठीक है तो उसके बाद आप क्या करोगे वहां से सीड को निकाल के तेने nga tayo chichuches grow choches ते वजह से चीज़ ना बेसिकली हम कर क्या रहे हैं कि जो आपका सीड हार्ड है सीड कोट जो हार्ड है उसको हम सॉफ्ट बना रहे हैं हाउ बाय हॉट वाटर ट्रीटमेंट अब ये जो है स्कैरिफिकेशन से बेटर है क्यों क्योंकि स्कैरिफिकेशन ना सीड रे खुरते तेवा टचेस जेंदुगा सा अगर हमारे पास बहुत सारा सीड लॉट है तो उस केस में हम ये जो हॉट वाटर ट्रीटमेंट जो है उसको हम प्रैक्टिकली इट इज़ मोर फीजिबल हम इसको ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं ठीक है सो दिस इज़ अबाउट योर हॉट वाटर ट्रीटमेंट मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट मेथड दैट इज़ ड्राई हीट ट्रीटमेंट सो नाम से ही पता लग जाना चाहिए कि वी आर यूजिंग ड्राई हीट सो वी आर नॉट यूजिंग वाटर हियर ठीक है सो वी आर नॉट यूजिंग द वाटर सो यहाँ पे हम क्या करेंगे वी हैव एन ओवन और वी हैव इंक्यूबेटर्स इन लैब तो वहाँ पे हम उसको प्री हीट करेंगे अप टू 180 to 212 degree Fahrenheit again this comes around 90 degrees Celsius to 100 degrees Celsius sakpa kitana ngatai incubator bo chat joste bor pasang tene tezam shik cha dena nga borte tene testing nga tai te nang kwa seed po kitana chichuano उस incubator yang na उस oven के अंदर हम seeds को रखेंगे ओके तो कितने टाइम तक रखेंगे ज़रा चिको दैट डिपेंड्स अपॉन द स्पीशीज़ बिकॉज डिफरेंट स्पीशीज़ हैव डिफरेंट इंक्यूबेशन टाइम तो कुछ स्पीशीज़ हैं कावा खेतना टाइम यून जिमाने गोरा मानो खाला 12 आवर्स इफ या बोर खचिगा खेतना 24 आवर्स तक इंक्यूबेट जो गोसा दो खचिगा 4 आवर्स गोसा दो खचिगा 1 आवर गोसा दो सो डिफरेंट स्पीशीज़ हैव डिफरेंट टाइम ऑफ इंक्यूबेशन डिपेंडिंग अपॉन द स्पीशीज़ ठीक है तेने हमें क्या करना है कि अपने सीड्स को जो है इंक्यूबेटर के अंदर रखना है द इंक्यूबेटर हैज़ बीन प्री हीटेड ओके वो आपने प्री हीट कर दिया है उसको 180 to 212 डिग्री फ़ारेनहाइट तक तो उसके बाद तेना achap nga tatang testing ne seeds gun philo apings te cool choste tene testing ne immediately it has to be sown हम इसको क्या करेंगे सो करेंगे यहाँ ना ग्रो चोचे नो से ना तापचे से नो तेने गाता है छू तांचे नो तेने गाता है शके रुआस्ता चे नो ते टाइम का गाता है बहुत सारे सीड्स ऐसे हैं वो रेडीली फिर ग्रो कर जाते हैं आफ्टर द ड्राई हीट ट्रीटमेंट ओके नेक्स्ट वी हैव एसिड ट्रीटमेंट So acid treatment, for example, nga tayo rice gune na nga mamang po use dyan o acid treatment. तो acid treatments कहाँ पे ज़रूरत है जहाँ पे our seed coat जो भी seed coat है काउ कितना मार शंटे होत क्या ठीक है and they are impermeable. So nga tayo seed चियोत ना ते seed po योत क्या खला seed around आपका जो seed coat है that is impermeable. So दारे nga tayo जिसपिन it doesn't permits oxygen nang kwa yung chuamet kyak hala tina sok la koi water rang nang kwa yung chuamet kyak so otok seed coat guni fia nga ta acid treatment ko san ko yang nga ta acid tang ko san ok otok seed guni fia ठीक है तो यहाँ पे हम कोई भी acid generally for example you have sulfuric acid nga ta chino H2SO4 hala
So sulfuric acid nga ta use chungya na nok room temperature ka है nga ta temperature वो कहता हमेशा room temperature का चूचेस. So suppose किसी कंटेनर में हमने sulfuric acid रखा तो उसमें हम क्या इंट्रोड्यूस करेंगे, हमारे सीड्स को इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है. And then we will keep it stirring with a glass rod. nga ta you for example glass rod glass rod nya po shugin borano. Okay, for some time tene test nga ta seeds kun nga ta philo a phings te khwano hala tene water nya po nga ta thuano test nga ta yu chi chano so chano, ठीक है. तो एसिड एची चोनोक जना ते हार्ड सीड कोट पो डिसॉल्व छ चोनोक या ब्यांस तोरानोक ते सीड कोट कालतेस का शंटे योतना ते नंको जो ब्यांस तोरानोक ताकि नंको वाखेते न ngataई चीजेस स्टिंग ने छुबो लामो यंपो छायाने न्यांगना ऑक्सीजन न लामो यंपो छायाने, ठीक है. सो दिस इज नोन एज एसिड ट्रीटमेंट yang ketang mangs tang shante shugin borgo samano otherwise I acid po ketanang mulla chulla chasano, ठीक मिराले. Okay. Next we have chemical treatment. hala chemical inang nyang matanga important chemical sumyut kya Ga3 KNO3 and then you have thiourea, thiosulfur if you use hey thiourea. Sons pa nga tanga daksarang nge chemical sumimingzes chik Ga3 KNO3 na thiourea, ठीक है. So Ga3 nge gas zachino, yes it is gibberellic acid. So gibberellic acid gibberellin जस्ते nga ta plant growth hormone changmala use ino. So gibberellic acid ikhetena it breaks seed dormancy जस्ते mane ma known fact chigino ki nga ta eka seed po mane grow cha metna tene tyo nga ta gibberellic acid treatment tangat na kwa gibberellic acid khwe ka treat chwat na ते seed pole demo choste grow chano dormant seed chang, ठीक है. So that is how हम gibberellic acid can be used for breaking seed dormancy. Then that's just like KNO3 is nothing but your potassium nitrate, ठीक है. So again this is an acid potassium nitrate. So potassium nitrate yang po treat jo nang ngatai seed dormancy chaganok yang seed po ngata germinate jo ngananok tena zoksla thiourea hala. So ई chemical sum बोल दे मो जोस्ते इतु जोस्ते बोर की gibberellic acid potassium nitrate नंग thiourea संका ऐसे chemicals हैं that helps in breaking seed dormancy to a very good extent, ठीक है. जैसे ngata gibberellic acid ngata wheat na use chano barley na use chano hala oats na use chano, ठीक है. So gibberellic acid po ma important no even ngata daksa brewing industry alcohol industry ka na ngata wine chodo alcohol chodo te gune na wheat barley gune seed coat po kokche se fia ngata gibberellic acid pa mang po use chano tena susla potassium nitrate ngata use chano rice se fia use chano tomato seed se fia use chano chili seed se fia use chano tomato seed se fia use chano. Then also the thiourea ngata gladiolas soks gune na use chano. So these are all examples hala baki ngeja chemicals gun itu aborgo sanoki ka chemicals gun important in kave kane seed dormancy ko ngata jak ngene, ठीक rale. Okay, now moving on, next we have water. So water खेतना मा simple ngata na chu hala. कभी कभी क्या होता है कि ngata seed around hala chika seed chiginang ते भी around कोई पक्ष पे ना yang na कोई दुनी hala areas gune na isu chemicals rigot क्या ते chemicals gunchi no ना का वजह germination वो inhibit चुत क्या. So these chemicals काउ seed coat in a present youth ई chemical एक है ना inhibit चुत क्या ची germination. So germinate वो छाचुगा में क्या hala. So now जलक चिक्तियों इन ओक germination छाचुआ मानो yang po ऐसे केमिकल्स जो है वो कभी कभी कैसे होते हैं वाटर soluble. So that means ता ई केमिकल्स गुन छु यहाँ पहुँच जुआत क्या. So that means अगर कलतेस कतंगाता ई का वाटर ट्रीटमेंट जो ना छु तंगना ई सीड्स गुना छु नार बांस दे बोरना तेने ई केमिकल्स गुन डिसॉल्व छाचे नो का केमिकल भी जास्ते को जर्मिनेट छाचो अमित ते केमिकल्स गुन जुचे नो डिसॉल्व छाचे नो इन वाटर एंड देन तेने गाता इनंग को वे सीड पो खेते नो पिलोआ ग्रो चो यांचन.
Okay, te if ya chang manok nga tay simply chui yo tap water de nga bor nang di te no nga tay hala chui na nga seed por bangs te borte tene testi nga tay tap na se na nga tene te mga lamo yang po nga tanga seed po kitang germinate chung na no yang na seedling bo grow chano. ठीक है? Okay. This was simple. कि chui na bangs te nga tay soft cha chuks te nga tay seed po grow chun hala. Okay. Next we have cold stratification yang na kaba pre-chilling zera halale. Tanga ta chi chanok zena ngata dare zera zoxla type ni zot pin seed dormancy ka be nanga chik pota ngata hard seed coat yo chise justin pin mechanical resistance yo chise justin pin yang chik chik ngata internal factors jang yo kya physiological factors jang yo kya ka ngata internal dormancy zera pin halale ta ot sok time hone ka be na internal dormancy yo achik po tene chi chanok zena there are methods like cold stratification hala. So क्या होता है कि ngata है for example yang ngata है seed ika draw chun so इस seed नंकुगा for example this is your embryo ठीक है now ta ई embryo खेते ना ready होत क्या yang हल नजर आता है embryo is fully ready it is matured but ख्वाची छानों से ना oxygen is supply वो खेते ना less होत क्या तो यहाँ पे उसको बहुत कम ऑक्सीजन मिल रहा है एम्ब्रियो को इसी वजह से वो एम्ब्रियो जो है वो जर्मिनेट नहीं कर पा रहा है ठीक है तो अब ऑक्सीजन कम है सो दिस इज एन एनवायरमेंटल फैक्टर का वजह से आता एम्ब्रियो वो ग्रो चुंगे ना मेरे बाकी सीड कोट ही चंग प्रॉब्लम में क्या सीड कोट पर ठीक होता सीड कोट पर शांति में क्या सो हम इस केस में क्या कर सकते हैं कि कोल्ड स्ट्रेटिफिकेशन यंग ना ngata इका cold treatment tangchano khwa ngata cold treatment tangchano hala ngata temperature ma noon 5 degrees celsius 10 degrees celsius ka I seed po ngata tang shugat na seed po tangmo condition na borat na tene chi chanok zena I oxygen bo khetena hala oxygen bo chi chanok zena cold temperature ka water na ma easily khetena dissolve chano for example ngata I seed po chuji na tang se bor kya hala this is water but it is chilled water ठीक है तो छु tangmo yoda chi po tena seed po tanga chi po chi chanok zena oxygen has a tendency to dissolve better in cold water so ngata chu agar tangmo yot na khetena oxygen mo ma dissolve chat kya so that means ngata khetena seed pa izuk temperature ji tangches tangmo temperature tangches ka venanga it provides the condition where oxygen is more available for the embryo ठीक है तो उस कंडीशन में ngata एम्ब्रियो आखेतना ऑक्सीजन बो मांगारी थोबानो का वजह से ताको डेमो चुस्ते को जर्मिनेट जो यानी क्योंकि सीड कोट का तो कोई प्रॉब्लम था नहीं तो इट वाज ओनली द एम्ब्रियो दैट वाज नॉट एबल टू जर्मिनेट बिकॉज देयर वाज लैक ऑफ ऑक्सीजन इनफ ऑक्सीजन नाउ व्हेन यू आर प्रोवाइडिंग चिल्ड वाटर chilled condition hala kawang atai cold stratification yang na pre chilling ang zirin hala so te time ka tene embryo khetana oxygen mo ma thobano because oxygen has tendency to dissolve more in cold water tene te vijaste embryo khetana grow chayana no yang tyo man pa yang factor important factor chi nok zena जब भी आप कोल्ड एनवायरनमेंट देते हो किसी सीड को तो उस सीड के अंदर एंडोजीनसली माने नंकु खुरंगा जिबरलिक एसिड yang na daksang langa ta zira choksla जिबरलिक एसिड GA3 production bo increase chanok when you give cold treatment yang na chill treatment tanga chikpo so आपको पता है जैसे ही आपका जिबरलिक एसिड मांगपो छिन तेजाम शिगी केतना सीड पो मांगा जर्मिनेट chanok तेजाम shi मांगा seed dormancy bo break chanok so this is known as your cold stratification yang na yang tan chiziren pre chilling okay then we have warm stratification next is your warm stratification so warm stratification matlab tonmo hala this is not not similar to your dry heat treatment to just mano it is warm stratification yang nang ata warm nang yampo ngata ikang yampo this time warm nang yampo it is also moist treatment moist and warm yang na
तिजुक सीड्स का गुना खेतना टेम्परेचर बुच एक टोनमो रिखाला टोनमो मतलब ते ड्राई बिल्कुल दरे जरा सोचला 80 to 100 degree Celsius जरते मन it can be room temperature, it can be a little warmer जैसे कि 23 to 30 degree Celsius यांगना हाला 25 to 35 degree Celsius शिक सकपे heat yang nyampo खेतना moisture रंग ठीक ठाक moisture जिंगा ता इंते सीड पोa तेने त्यो तांचे स्पीशीज ते ची छानोक से ना if there is internal dormancy due to daring ata goma factor chik ches spin ka vinange spera tang spin after ripening zerkanji khala after ripening che zara nok sena seed chi nang ko wa khetanang chi chanok embryo fully matured ino khala it is no doubt matured but kho khetanang for a certain time kho khetang germinate chung yana manok and that period is known as ripening period kho ripening period chi go sat songspa tatyo metkan choche sefia ngatai kho moisture ang tain ngatai kho warm temperature ang tang achikpo tene kho te time sakpa shrung magosa dormant period na duk magosa I embryo khetanang demo choste khorai leaves nang khorai roots gun khetana form choche start chano ठीक रहले now we will do the last ngatai topic measure yang na last ngatai factor chichi ka khetana I'm sorry ibo nangku ga सोचते 9th point po inang को स्थान या नमरुक मैं ऊपर यहाँ पे लिख देती हूँ this is photochemical dormancy युवाताएं किसके बारे में बात कर रहे हैं last is photochemical dormancy photo जरा चिक पोंगे जा पता सोचते नो photo means light ठीक है so there are certain seeds which are very light sensitive hala का zuk rik seeds जो क्या काउन खेते ना मंग्स तेंग light sensitive क्या ठीक रहा so that means ngata गोमे 36 to 72 hours hala का बिना ngata seed po खेते ना taps दियो hala seed po soil inang ko ngata grow chala taps diot na so these 32 to 72 hours are very crucial yang na ma important ino critical time ji ino I seed po ketanang grow chena micha tenang ne root shoot be na mi being seedling ji do na mi dot jashkani tu sefia 36 to 72 hours time bo ma ketanang crucial ino khala sons pasang te fia ngata chi cho sa no zena agar te time ka kwa light was sufficient thoba metna gome 36 ne 72 hours time na kwa sufficient light ka goshes jo to thoba metna tene te seeds gun ngata आगे चल के वो germinate नहीं कर पाते हैं okay so you ma ngata prevalent inokavena freshly harvested seeds ngata jinguncha bat sarte ngata jingos shngapsa tang sarte sting ne seeds gun ngata khyoano tene te seeds gun khetanang ngata khata grow chos tang nash kya mano khala tene ngata chi chonok zana te seeds gun ngata scum shuano उसके वाटर कंटेंट को हम काफी टाइम तक कम करते हैं तेने ngata khongi me na bora nok scum shuano ta beshi te moisture kam cha chonok no doubt te vija se pathogen sa yo amano yang yampo kheten nang khwena dormancy lo samano so that is why ngata photochemical dormancy bo ma important dormancy chikchigang ino kawena khitenang chezna ngata pata no ki intensity hala light intensity yang light potam shi intensity focus sin sam shi chat yong gosin yang khetang light duration bo light tus potam shi focus hala त्यो खेतना जरूरी इनोक्ते ना विजास्ते ngata germination नंगा moisture बोचम शिगोन temperature चम शिगोन ते ना विका depend छनोक light का हाला ते फिया खेतना त्यो break चोचे से फिया अगर एक ऐसा seed है का विना खेतना natural light अंडर अगर को dormancy break चो न्याना met ना तेने ते time में का ngata ची चो न्याना नोक जेना indoor से ना ngata नंगा yang na laboratory गुनेना nursery गुनेना seed dormancy चागन जरात ना तेने ते तु से kanga ta chi chunga na nokzena 720 sorry not 720 750 okay to 1250 lux of intensity of light tenga ta intensity lux na measure chuanok so izam shi intensity light fluorescent light chika white light no khala white fluorescent light eno artificial light ngata hala tangyana no for 8 hours per day so jare na घंटा gya defia
750 to 1250 lux intensity light nga ta I seed po tangin borat na hala jak chu chunga chakpa testing ne nga ta seed po agar grow chat na tene kwa light intensity ka nga la pura macha in pin to pura songs de tene we can break that dormancy and now your seed can germinate hagwale. So these were the types of yang nangatay the methods of breaking seed dormancy. Kavina gumarangatan just scarification, kavina ngatan touches yang na biang torches seed coat guna, kavi just impermeable seed coat po permeable urine to oxygen, water and various other things. Hala hot water treatment tano hala kavina choose hunting ngata use chano seeds gun bangche sefia. Tena tusla dry heat kavina ngata incubator yang na ovens use chano ngata dry choche sefia seed treatment seed pocha dormancy chakche sefia tena chosla acid treatment like sulfuric acid nitric acid gun use chano kavi kana ngata seed coat and post bolmo yang nate vina biang stornyanin tena chosla chemical treatment जैसे कि ngata potassium nitrate tena chosla gibberellic acid thiourea chokse ngata chemicals gun use chungyana no tena chosla nga tay normal chui nangar bangs tyang seed coat khachik bolmo chayan cheno hala te choks nga tay treatment jongyan cheno tena chosla nga tay cold stratification yang na pre chilling ka vena nga tay tangmo chilling treatment tangano seed kuna ka ve jaste khoi na oxygen ni flow bo gyala chen to the embryo and yampo gibberellic acid synthesis chen hala testing ne we have warm stratification kavina moisture nang heat pongiska tangat and lastly we have photochemical treatment kavina nga tai high intensity light ka 750 to 1250 lux intensity light 8 hours per day tano kavi kane light requirement po pura chano yang ata khetana seed dormancy bo metkan chungya na ठीक rale so seed dormancy bo inna zugi naturally yang ata nature inang korang time ina kulya se thili nanga kho dukste jab tak wo germination michate sakpa ko shungste dukste kulya weathering changing dormancy break chonok no doubt but is seed dormancy method ka ata so break choche si methods gun laboratory nang yang khetana nga tang rai khampa khetana ka zu chungyanin te methods gun ka scientific methods in te nga ta discuss just no ठीक में डाले thank you